अक्सर ये अनुभव है अक्सर ये अनुभव है कि दुनिया में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है। बस कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद ही आती है। ये अनुभव। So good morning and welcome back friends to another episode of Money Mindset Mastery with Vkas Joshi. Friends, we have started this series with the sole purpose of development, self-development, self-growth, self-confidence, self-esteem. We are moving from restricted mindset to growth mindset. We are moving from financial accumulation to financial stability. That is our purpose. When we started the series, we have learned how to set the goals, how to set the path to reach the goals. What are the requirements that you should consider while you're considering your goals? How you should set your goals in the manageable fashion. So also, how you should intermittently, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जो भी प्रोग्रेस हमने किया है उसे इवैल्यूएट करना चाहिए. You should evaluate the progress also on daily basis. That will help you to move forward. And across this system, we came across another interesting part, that of limiting belief. I have concentrated more on this limiting belief. The reason, friends, limiting belief आपने मन में घर बना के रखे हैं, तो वो खुद आपको ही काम करना पड़ेगा. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. भले ही आप 4 किताबें पढ़ लो, भले ही आप 4 वीडियोस देख लो, आप किसी सेशंस अटेंड कर लो, लेकिन जब तक अपने मन में बसी धाराएं को अटेंड नहीं करोगे, इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला. So limiting beliefs become the first part to address, because while we made ourselves self-aware, हमने देखा what are our strengths and what are our weaknesses. उस वीकनेस में ध्यान में आ गया कि लिमिटिंग बिलीफ्स इज द मेजर पार्ट जो हमने एड्रेस ही नहीं किया है. ये धाराएं बचपन से बनी है. हो सकता है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, सोसाइटी में बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव होता है, और हम धाराएं बना लेते हैं कि दिस इज व्हाट लाइफ इज. Now this limiting belief, if you are not analyzed as you grow further towards your self development, that is hindering your progress, because the analysis should be with respect to your personal goal. सोचना यह है कि ये लिमिटिंग बिलीफ जो हमने मन में बना के रखी है, whether it is fruitful, क्या वो सच्चाई है, क्या मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूं. ये हमने सोचा ही नहीं ना कि इंप्रूव कर सकते हैं. किसी ने बोल दिया तुम नहीं कर सकते, अब तुमने सोच लिया हाँ मैं नहीं कर सकता. अरे उन्हीं को तो दिखाना है कि तुम कर सकते हो. उन्हीं लोगों को बताना है कि जो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कैनॉट बी कंपेयर्ड. Two different people cannot be compared. I am having a different set of skills, you are having a different set of skills, cannot be compared. You have to explore the things to change. Your potential is important, and that potential is restricted by the limiting beliefs. Hence, I am stressing more on the limiting beliefs. Friends, I have taken efforts to write down all the possible limiting beliefs that may come into anybody's mind. You name them, you may refer it to any of my videos. I have addressed them, I have defined them and addressed them, how you can improve on them. That is important. खुद को अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने मन को यह समझाना पड़ेगा कि ये लिमिटिंग बिलीफ निकालना ही है. मैं नहीं कर सकता, मेरा प्रॉब्लम है, ये शब्द हमको नहीं चाहिए. We are not interested in these words. First of all, you have to remove them. No, ये हमको नहीं चाहिए. We should move on towards positive affirmations. What are the possibilities? What are the probabilities that I can move towards my goal? That should be our focus. And that is what we are doing in the process. Today's interesting belief is that I expect others to hurt me. है ना, कुछ भावनाएं ऐसी होती है, मैंने कुछ किया तो लोग ऐसे ही करेंगे, कोई मुझे चाहता ही नहीं है, वो मुझे डुबो ही देंगे. You see, they are always all emotional feelings. That is what I call emotional things, which are negative things.
ऐसे कैसे सोच सकते हो? दुनिया का बैलेंस वैसे ही है ना फ्रेंड्स, कुछ अच्छे रहेंगे, कुछ बुरे भी रहेंगे। मैंने हमेशा कहा है, इमेजिन रामायण विदाउट रावण, होती क्या रामायण? So our mythology has taught us, but we are ignoring the facts. Our mythology has taught us when there are good things, there are bad things also. The bad things are to be eradicated. That is what Ram did. Lord Ram, कहानी अपनी वैसी है ना, भगवान राम ने रावण को मार दिया, ये कहानी है। सच्चाई भी वही है, अपने मन के रावण को हमको निकालना है। The bad things are to be removed, limiting beliefs are to be removed. So whole world has got the good people and bad people also. So don't think in one way, I expect others to hurt me. हाँ वो मुझे मारेगा ही, मैं कुछ भी करने जाऊं वो मेरे काम में रोड़े डालेगा ही। क्यों डालेगा? Are you so weak that somebody is coming into your way and you are unable to proceed further to your goals? That means you are not focused. You are not decided to improve on yourself. That is the concern. And इसे मैं कहता हूं limiting belief. So when I say that I expect others to hurt me, it is a negative mindset wherein you anticipate or assume that others will cause them harm, cause you harm, whether emotionally, mentally or physically. वही ने कहा ना कि हम सोचते ही नहीं वो मेरा बुरा ही करेगा, वो ऐसा वो मेरा अच्छा देख नहीं सकता. I don't know why are we wasting time on thinking of others. Why are we not concentrating on our goals? How can you waste time on thinking on others कि नहीं वो मेरा बुरा करेगा? वो क्यों करेगा बुरा? उसे करना, वो उसका काम करने दो. He is wasting his time by thinking about you. But it is also important that he is thinking about you. है ना? वो instead of focusing on his goals, he is thinking about you and wasting his time. अब वो सोच रहा है कि मतलब तुम कामयाब नहीं, वो भी कामयाब नहीं, उसे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है. But if you are not focusing on your goals, तुम्हारा काम, तुम्हारी कामयाबी प्रॉब्लम में आने वाली है. So this belief often stems from the past experiences of betrayal, rejection, abuse, leading to develop a defensive and mistrustful outlook on relationships and interactions with others. As a result, you may distance yourselves from connections or engage in self-sabotaging behaviors to avoid perceived harm, ultimately hindering personal growth and development of healthy relationships. Overcoming this limiting belief involves recognizing and challenging negative thought, practicing vulnerability and open communication in relationships, setting boundaries to protect oneself, and seeking support from trusted individuals or professionals to heal from past traumas and rebuild trust in others. That will help you rebuild your relationships. Friends, if you are isolating yourself, is it a good thing? No. You should be able to take along the people. मैंने अभी कहा, हमारी माइथोलॉजी हमको सिखा के गई है, बट वी आर इग्नोरिंग द फैक्ट्स. मैंने पूछा आपको, इमेजिन रामायण विदाउट रावण, होती क्या रामायण? नहीं होती. सो दैट इज व्हाट द नेगेटिव पार्ट इज. नेगेटिव पार्ट नहीं रहता तो पॉजिटिव पार्ट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. रामायण नहीं करती तो किसको राम को पता ही नहीं होता. सही है ना? हनुमान जी का क्या रोल था, सीता जी का क्या रोल था, सैक्रिफाइस किसे कहते हैं, all these values would not have been known had not the Ravan been there who was to be killed. The bad part was to be eliminated. That is important. So दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोग सब होते हैं friends. We have to concentrate on अच्छे लोग. We should not waste our time thinking of the people who are hindering your progress. That is sheer wastage of time. So you should set your boundaries. ये नहीं करना, इसके आगे नहीं जाना है, बस. You should be able to say no to the things. See, you might not have been told of such things, but I tell you friends, and I mean it, say no to the things. जो नहीं कर सकते तो सीधे ना बोलना है, जो तुम्हारे फोकस अप्रोच में डाइल्यूट कर रहा है.
जो तुम्हारे गोल्स की तरफ जाने में हिंडर्स कर रहा है, जो तुम्हारे सक्सेस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, who is eating away your time, you have to say no to such people, be aloof from such people. I have said in one of my videos also, आजकल तो व्हाट्सएप पे ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, है ना, बचपन वाले दोस्त है, स्कूल वाले दोस्त है, ये बहुत सारे ग्रुप्स है. Whether you should be a part of their communication processes is the question that you have to answer. Because these group after so many years, जैसे कहते हैं ना कि इतने सालों बाद अगर मिले तो जिसे हम पहचानते ही नहीं है उसका एटीट्यूड क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा है, जब तक कि हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे. Once you communicate, we understand that the attitude is not in favor of your progress. You should just cut them off. It is better that you are aloof from such people. So, friends, do not be a compulsory part of the people who are negative towards your life. Don't waste your time in thinking of others. Don't waste your time in just thinking कि नहीं वो मेरे सक्सेस से वो जलता है, वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. अगर ये तुम्हारी सोच है तो वो जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. Because you are wasting your time in thinking about him. Think about your focused approach. That is what you should do. So you should be self-aware. You should be aware कि कहाँ मुझे change करना है. You see, our mythology is a perfect thing to learn from. वो भगवत गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, these are the wonderful granths to learn from. See, where we have to act and where we have to live is what we should understand. इसीलिए महाभारत में भी लॉर्ड कृष्ण को रणछोड़ दास कहा गया है, because he left the battlefield. सोचा मैंने अपने सारे इतने भाई बहनों को मारूंगा मैं. He preferred to leave the battlefield and leave that particular battlefield to win allow that other Maharaja to win. You should know where to be assertive and where to be assertively say no to the things. Set the boundaries. Let the people know. Create trust among people, that the relationship build on trust. For that, your integrity, your actions should be in line with your words. This will help you to generate more trustful relationships, more people to come along. It takes time, friends, because analysis, then you have to move on, but you have to do that. Because the focus approach is to change ourselves for self-development. So avoid isolation. नहीं सब ऐसे भाई होगा तो मैं किसी के साथ बात ही नहीं करूंगा. अरे ऐसे करके नहीं चलने वाला. You should be the part, but where you should say and where you should not, where you should open your mouth and where you should not, is what you have to understand. Which people you have to take along and also which people you have to leave away in your path is important decision you have to make. Forget about the past. Forgive them. Let them do what they think. Don't become a part of somebody else's failure. किसी के बुरा करने से तुम्हारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ. So you are wasting your time. है ना, हम आपस में हम देखते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, मैं इसको सिखा दूंगा, मैं उसको बता दूंगा, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं ये करूंगा, वो करूंगा. What is more difficult part? संभालना. Help people. That is a difficult part. किसी को मारना आसान है, पोजीशन है, कर सकता है आदमी. मिलेगा क्या उसको? कुछ नहीं. एक क्षण का आनंद कि मैंने उसको सिखा दिया, बस. जिंदगी भर बद्दुआएं लेता रहेगा. So don't waste your time in thinking that others are hurting me. No, 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 no. Let them do their job. Forgive them. Concentrate on your goals.
success will come along, and there is nothing great than to be successful. अगर उसे भी कुछ सिखाना है तो तुम सक्सेसफुल बन जाओ, तो वो समझ जाएगा कि वो कितना गलत था जो तुम्हारे बारे में सोच के उसने टाइम वेस्ट कर दिया. So friends, your emotional sensitivity towards your actions, towards your team members, towards your family members, towards the people who are showing you the empathy or showing you the or helping you in your endeavor to reaching your goals of self-development is important. So you have to build that emotional relationship also. You should. मैंने कहा है आपको कि you should have a work-life balance. कभी कभार हमें जिंदगी में अपने दोस्तों के लिए टाइम रखना ही पड़ता है. मैं कभी कभार इसलिए बोलूं कि शायद आप में से किसी ने ये सोचा नहीं होगा, लेकिन मैं कहूंगा आपको, spare some time for your loved ones, spare some time for your family members, spare some time for your friends. These are the people who are helping you in your progress. You have to take them along. नहीं तो आइसोलेशन में जल्दी जल्दी बहुत ऊपर पहुंच गया, ओके, अब फिर अकेला रह गया, कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स. सक्सेस in isolation is a failure. Success is when you take the team along. अरे एक दो लोग तो रहेंगे ना, होने चाहिए ना, जो तुम्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, तभी तो वो सक्सेस का मायना है. किसी का अच्छा किया है आपने, जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है, ऐसे लोगों को साथ लेके चलना है फ्रेंड्स. You should able to spare time. You should have emotional relationship with such people. Don't impose self isolation. Don't do that. आमतौर पे होता है, अब ऐसा मैं कल से बात ही नहीं करूंगा. अरे ये सॉल्यूशन नहीं है. बात ना करना ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता. किसी भी प्रॉब्लम का हल बात करने से ही होता है. बट हाउ वी अप्रोच एंड व्हाट वी थिंक ऑफ, अगर मन में ये रखोगे कि नहीं वो मुझे हर्ट ही करने वाला है, तो सॉल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मन में एक धारणा बना के रखी है. तो जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव आने वाला है. That is what I mean to say. That remove that limiting belief. That will limit your personal growth. अगर यही धारणाएं बना के रखोगे तो डेवलप कैसे करने वाले हो? अगर पिछला पार्ट छोड़ोगे नहीं, एक्सपीरियंसेस जो बुरे एक्सपीरियंस है उसको भूलोगे नहीं, उसको फॉरगिव नहीं करोगे, तो आगे कैसे बढ़ोगे? So whenever you have to you are working up, moving up the ladder. अगर आप लैडर चढ़ रहे हो, you are moving up the ladder, you have to leave the last step to move upwards, correct? अगर आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हो तो आपको पिछला वाला स्टेप छोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ऊपर जा पाओगे. तो छोड़ना भी सीखो. Don't carry your that baggage along with you. तो वो इतना बड़ा बन जाएगा कि सॉल्यूशन निकलेगा नहीं. फिर सेल्फ आइसोलेशन, फिर स्टैग्नेशन, स्ट्रेस. स्ट्रेस के साथ डॉक्टर फ्री है, मतलब वो फ्री में आता है, आपको बहुत खर्चा करवाता है, क्योंकि स्ट्रेस आ गया. All the ailments, all the problems are the basic reason is stress, and the stress comes majorly from stagnation of the process, of the stagnation of thinking process. That is what you have to avoid, friends. So whenever you think कि नहीं चेंज नहीं हो पाता है, just introspect, क्यों नहीं हो पा रहा है? Because you are wasting time in thinking of others. Think about you. सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ फ्रेंड्स. जब भी ऐसा समझ में आ गया, मिरर के सामने खड़े हो जाना and start talking. Now you will realize how you are reacting. तुम्हारा फेस कैसा है, what reactions you are giving. Now you will understand what more you. जब सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, लिखोगे, तब समझ में आएगा. That is what you have to do. इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव यह कहता है, दुनिया में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है. दुनिया में हर चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है. बस कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद ही आती है. So experiences will make you successful, provided you shed away, you forgive the bad experiences, the bad people,
Remove them from your life. Don't think about them. Don't think that others are going to hurt you. Think that you are going to be successful. Take along the people who are with you. Seek the feedback from those people. Improve oneself. I sign off in this note, friends, and we meet again in another episode of Money Mindset Master with Vkas Joshi. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity, friends. Do enjoy.